start. The Punjab and Haryana High Court left the decision on the controversial Tata Camelot project on the concerned authorities from whom the project is required to get necessary sanctions, permissions, and clearances under the Wildlife Protection Act and Environment Protection Act stop while disposing of a public interest litigation PIL challenging the permissibility of the project proposed to be set up by Tata in Chandigarh's periphery. The division bench of the High Court, comprising of Chief Justice Ranjan Gogoi and Justice Mahesh Grover, held that the Periphery Control Act is applicable to the housing project but only on the fulfillment of the clearances, sanctions, permissions, and other preconditions required under the Environment Protection Act and Wildlife Protection Act. Stop. The division bench held that the project shall have to invoke the jurisdiction of the Wildlife Protection Act and Environment Protection Act, and after fulfillment of the required formalities, the project can make any further progress so as to avoid a situation where the vision of one Monley Corbusier is pitted against the myopia of the multitude. Stop. On the question of whether the project violates the edict of Chandigarh, the court rules viewed from the strict directory meaning of the word edict, that is a decree issued by the sovereign or other authority or any authoritative proclamation or command. The words of Monley Corbusier may not amount to an edict at all. Stop. It is in the nature of a formal wish of a person that the future generations would continue to preserve what has been built. Stop. Further referring to various authorities which are required to give clearances to the project, the High Court ruled a more rigorous regulated development in what are now the remnants of the periphery and the area adjoining it is the need of the hour for which the stakeholders, that is the administration of Chandigarh, the state of Punjab and Haryana, as also the authorities under the Environment Protection Act and the Wildlife Protection Act, have to demonstrate the need to engage themselves intensively and not acquire a placid approach indicating an eloquent acquiescence to the violation of the 1995 Act, Periphery Control Act, and the Periphery Policy. Stop. The petitioner, Alok Jha, a local advocate, had challenged the permissibility of the project and even contended in the PIL that the housing project, which is proposed to come up in the Sukna Lake catchment area, requires clearance under the Wildlife Protection Act, which had already been refused to the project. Stop. The promoters of the project has sought a review of the refusal, which is still pending. Stop. The promoters had raised contention that the Periphery Control Act is not applicable to the project, while the petitioner has pleaded that the act is applicable. Stop. Admitting
the contentions raised by the petitioner, the HC has ruled that the Periphery Control Act is applicable to the project, but the promoters of the project shall have to apply for the required clearances, permissions under the relevant provisions to carry on with the project. Stop. Commenting on the order, a Tata Housing Development Company spokesperson said, "We welcome the decision by the court, which has been taken in the best interests of society at large. Stop. We assure that the manner in which the project has been planned will make it another architectural marvel. Stop. The project is conceptualized as a green development to be in total harmony with the environment. Stop. The project will proceed further after securing necessary permissions from the appropriate authorities. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है। आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है, ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।